So yesterday we were talking about Nernst equation, and what I'm going to start with today is the formula. For the revision of the formula, we are talking about an equation in which we discuss the non-standard conditions, the calculations of electrode potential at non-standard conditions with the help of standard condition value plus RT over ZF, natural log of oxidized form over reduced form. R, gas constant, T, Kelvin temperature, Z, number of electrons transferred in the reaction, which are taken from the balanced chemical equation. F, Faraday's constant. We are familiar with this value. We have used it before. Natural log of oxidized form versus reduced form. Remember, if we are writing the standard equation, reduction equation, then the species on left-hand side is usually the oxidized form, and species on the right-hand side is usually the reduced form. Now, in this case, we can use a different equation if the temperature is at 25 degrees centigrade and natural log can be converted into a base 10 log by a multiplication factor of 2.303. And of course, we can go for the values of R, T, and F. And this constant value, the figure 2. Which was not, any number was not given in the complete equation, but there is a number of constant value of 0.059 divided by Z when R, T, and F values are taken along with the log 10, log of base 10 value with oxidized form. See, remember the note that if temperature is not 25 degrees centigrade, we cannot use this equation. We need to get back to the original entire full form of Nernst equation to be used. Now there is a small worked example over here to give you a very good idea of how we are going to use that Nernst equation. Now this example, this worked example uses a short form of Nernst equation. Let's go with the example. Calculate the value of electrode potential at 298 Kelvin, which means the short form can be used. As soon as you see the 25 degrees centigrade value or 298 Kelvin value, that means you can use the short form in that worked example. I've explained this thing yesterday, and today we are going to consider the same thing. In a copper ions electrode cell, which has a concentration of copper ions equal to 0.001 mole, which is a non-standard condition, okay? E0 value is plus 0.34 volts. Now substitute the value. Substitute the E0 value first, and then 0.059, the constant factor, Z are 2 because there are 2 electrons involved in copper and copper ion cell. They haven't written the equation over here, but having the balanced equation in your mind would help. If that's not on your mind, do it on over there in the form of writing. खुद से लिखें, लिखकर उसे balance करें और फिर इस Z के factor को put up करें. आपने Z के factor को suppose नहीं करना है, ठीक? इसे हमेशा balance chemical equation से pick करना है. Then log 10 value and the molar concentration was 0.001 moles. So putting up those values, we get the E value to be 0.25 volts. Now, the important thing to be considered over here is that log 10 oxidized form converted this sign of positive into negative, which changed our entire value. Now, there are 3 pointers given over here. If the concentration is 1 mole per decimeter cube, which is actually a standard system, log 10 oxidized form is 0, because log 10 of 1 is 0 according to mathematics. आयशा और अलवान, आपके लिए बात कर रहा हूँ, log 10 की वैल्यू अगर 10 हो तो आंसर 1 आता है, log 10 की वैल्यू अगर 1 हो तो आंसर 0 आता है मैथमेटिक्स में. ये लॉगरिथम चैप्टर से वैल्यूज हैं, ये एज सच हैं, ये यूनिवर्सल फैक्ट्स हैं, मतलब इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है इसके पीछे, ये एक फैक्ट है और हम इसे इसी तरह से यूज करते हैं. ठीक है, आप लोग चूंकि मैथ बैकग्राउंड नहीं रखते इसलिए ये चीज एक्सप्लेन कर रहा हूँ. तो ऑफ कोर्स अगर हमारे पास ये पूरे का पूरा फैक्टर, सेकंड फैक्टर 0 हो जाएगा तो E और E0 आपस में इक्वल हो जाएंगे, and hence the result E is equal to E0. If the concentration is less than 1 mole per decimeter cube, log 10 oxidized form is then negative, and the E value is less positive than E0 value. Vice versa, if the concentration is greater than 1 mole per decimeter cube, once again a non-standard condition, then log 10 oxidized form is positive and E value is higher, greater than, or more positive than E0 value. See,
I hope we are clear about these 3 points because they're very important over here and they will give you a quicker Yes. idea about this. ठीक है, थ्योरी का पेपर 4 करते हुए तो ये हमें ये आइडिया देंगे कि हम अपना आंसर चेक कर सकें, लेकिन हायर टेस्ट के लिए जिस तरह अभी रोमा से भी बात हो रही थी, आयशा और रोमा से, कि हम हायर टेस्ट की बात करें तो ऐसे पॉइंटर्स जो होते हैं वो हमें एमसीक्यूज के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, क्योंकि वो हमें ये आइडिया दे सकते हैं कौन सी आंसर ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं, दो के एज 2 स्टूडेंट ने अपने एक्चुअल एग्जाम्स में कोई एमसीक्यूज नहीं करने होते। ठीक, आर वी क्लियर अबाउट दीज 3 pointers? Any questions before I move Yes. on? Right. Okay, good. So feasibility predictions based on E naught don't always work. The feasibility of a reaction based on E naught values is no guarantee that a reaction will proceed quickly. It only tells us that a reaction is possible and the reverse reaction does not occur. Some reactions are feasible, but they proceed so slow that they do not seem to be taking place. For example, the lack of reactivity of zinc with cold water. Remember that water contains H positive ions. The relative half equations would be like this. Even when the low concentration of H positive ions is taken into account, E naught values predict that the reaction should occur, and the reaction also occurs. But the rate of reaction is so slow that it takes too much to occur, a very long duration of time. Okay? So the rate of reaction rather than the value of E naught, which is determining the lack of reactivity. So feasibility predictions do not always work. A reaction may seem feasible, but the rate of reaction might be so slow that it doesn't work for a longer duration of time. See, it's a conceptual thing. Do you get the point? सही, तो ऐसा हो सकता है कि आपके पास ऐसा क्वेश्चन एग्जाम्स में हो और आपके पास पेपर्स में ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें आपको फिजिबिलिटी कैलकुलेशन के हिसाब से रिएक्शन फिजिबल लगेगा, लेकिन जब उसे रेट ऑफ रिएक्शन पे डिस्कस करेंगे तो रिएक्शन बहुत स्लो हो जाएगा। ऐसी सूरत में ए लेवल्स के पास पेपर क्वेश्चंस अगर आप देखेंगे तो वो आपको ये वाला पॉइंट और इसके साथ रेट ऑफ रिएक्शन वाला पॉइंट जो कि हम पीछे एएस में भी कर चुके हुए हैं, और बाय द वे 8-2 के अगले चैप्टर फर्दर इंफॉर्मेशन अबाउट इक्विलिब्रिया या फर्दर नॉलेज अबाउट इक्विलिब्रिया पे हमारे पास अभी एक और चैप्टर है, उसमें भी जब हम रेट ऑफ रिएक्शन डिस्कस करते हैं तब भी हम इन दोनों पॉइंट्स को आपस में कंबाइन करेंगे और कंबाइन करके डिस्कस करेंगे। ई नॉट वैल्यूज के हिसाब से रिएक्शन फिजिबल होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, रिवर्स में पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन के हिसाब से वो रिएक्शन बहुत स्लो होगा, जैसा कि अभी ये एग्जांपल भी दी हुई है। ठीक, अब इसमें एक क्वेश्चन नंबर 28 है जिससे मैं एक पॉइंट भी पिक करना चाहता हूँ, क्योंकि हमने ये पॉइंट आईजीसीएसई में डिस्कस किया होता है लेकिन ऐसे मैं रीडिस्कस करना चाहता हूँ। Question number 28 over here in the pink portion says, an industrial process relies on the reaction that is impractically slow under normal conditions. How might you try to solve this problem? Use your knowledge of rate of reactions to suggest several different approaches. तो हमारे पास बहुत सारी अप्रोचेस होती हैं। अकॉर्डिंग टू ली शर्टली प्रिंसिपल हमारे पास वी हैव सेट ऑफ 4 to 5 डिफरेंट कंडीशंस दैट वी कैन मैनेज कि हम उस रिएक्शन को स्पीड अप करें। फॉर एग्जांपल हम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इंक्रीज कर सकते हैं, प्रोडक्ट्स को रेगुलर इंटरवल्स के बाद सिस्टम से निकाल सकते हैं ताकि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जरा ज्यादा स्पीड से जाए। ठीक है, टेम्परेचर का इंक्रीज या डिक्रीज, प्रेशर का इंक्रीज या डिक्रीज इन केस ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स, surface areas का increase in case of solid reactants, और finally speed को increase करने के लिए या less time duration को लाने के लिए catalyst का usage। ठीक है, सो हमारे पास बहुत सारी अप्रोचेस होती हैं और ये हमने पास में आईजीसीएसई में एएस में ये चीजें डिस्कस भी की हुई हैं कि कैसे हम किसी रिएक्शन को इंडस्ट्री के हिसाब से रिलाई कर सकते हैं कि एक स्लो रिएक्शन जो कि इम्प्रैक्टिकल है हम उसे एक्चुअली प्रैक्टिकल या रियलिस्टिक अप्रोच तक ला सकें। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखनी है। क्वेश्चन नंबर 28 का कॉम्बिनेशन इस ऊपर वाले पैराग्राफ्स के साथ बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये पास्ट पेपर्स में भी काफी किया हुआ मिलेगा। ठीक, क्लियर हो गई ये चीज? अगर आपको याद हो तो हम इससे पहले कॉन्ट्रैक्ट प्रोसेस, पेपर प्रोसेस जैसे प्रोसेसेस जो कि इतने स्लो नहीं है, ऊपर वाली एग्जांपल तो बहुत स्लो प्रोसेस की दी हुई है जिंक और कोल्ड वाटर की, पेपर प्रोसेस या कॉन्ट्रैक्ट प्रोसेस की निस्बत स्पीडियर है। ठीक है, लेकिन स्टिल
उन्हें और स्पीड अप करने के लिए या अपने प्रोसेस को और प्रैक्टिकल या रियलिस्टिक बनाने के लिए हमने बहुत सारे काम किए हुए हेबर प्रोसेस या कॉन्टैक्ट प्रोसेस में. फॉर एग्जांपल अ टेम्परेचर चेंज, फॉर एग्जांपल अ चेंज इन प्रेशर, फॉर एग्जांपल इंक्रीजिंग द concentration of reactants or taking out products after regular intervals, and also the use of a high surface area based catalyst are one of our approaches, or few of our approaches actually. Are we clear about this point? Good. Moving on to the next one. Now let's जी discuss सर. the cells. जितना हमारा mathematical और theoretical portion था about the E values, the E standard values, E naught values, वो पूरा हो गया. अब हम कुछ cell types पढ़ेंगे, कुछ electrolysis पढ़ेंगे, और ये जो हमारा electrochemistry का chapter है ये clear हो जाएगा. तो आते हैं cell types पे. जी. सर ये केमिस्ट्री में जो होता है सर, जैसे फिजिक्स में इक्वेशन और वो थ्योरी बैलेंस हो जाती है, तो लेकिन सर केमिस्ट्री में ज्यादातर थ्योरी होती है, तो सर अगर हमें इसके नोट्स बनाने हो तो वो कैसे बनेंगे सर? वो मतलब इतनी ज्यादा थ्योरी होती है. हाँ, हमारे पास थ्योरी और कॉन्सेप्ट्स आपकी केमिस्ट्री में ज्यादा होते हैं, मैथमेटिकल पोर्शन कम, क्योंकि मैथमेटिकल पोर्शन हायर लेवल की रिक्वायरमेंट है. तो आप ऐसा ही करेंगे कि अगर आप नोट्स भी बना रहे हो तो जिस तरह से बुक में थ्योरी ज्यादा और इक्वेशनल पोर्शन कम है, आप भी उसी तरह से थ्योरी ज्यादा और इक्वेशनल पोर्शन कम ही रखेंगे, क्योंकि इक्वेशन का जो पोर्शन होता है ना वो एक्चुअली आपकी केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री के पार्ट में होता है, और इवन ऑर्गेनिक वगैरह में, इनऑर्गेनिक में या एनालिटिकल में तो वो पार्ट इतना ज्यादा है भी नहीं, तो आप वो उसी हद तक रखेंगे. अभी चूंकि हम स्टार्ट हमेशा हर जगह मर्तबा हम ये कह रहे होते हैं कि जनरल या फिजिकल केमिस्ट्री से कर रहे होते हैं. हमने एएस में भी ऐसा ही किया, पहले वो की, फिर ऑर्गेनिक की, फिर हम फिर इनऑर्गेनिक की, और फिर ऑर्गेनिक पे आए, एंड में हमने एनालिटिकल को देखा. तो यहाँ भी कुछ इसी तरह की तरतीब होगी, पहले फिजिकल है, फिर इनऑर्गेनिक है, फिर ऑर्गेनिक की बारी आएगी, उसके बाद कोई और ब्रांच है नहीं. इस मरतबा हम बायोकेमिस्ट्री भी टच करेंगे, इस दफा हम एनालिटिकल भी टच करेंगे, इस दफा हम कंप्यूटेशनल या थ्योरेटिकल को भी टच करेंगे. A2 में थोड़ा सा ज्यादा टाइप्स हैं केमिस्ट्री की जो कवर अप की जाती हैं, तो उसी तरतीब से इसमें सिर्फ वो वाला हिस्सा जो फिजिकल केमिस्ट्री का वो कुछ इक्वेशन के मैथमेटिकल क्वेश्चन से होता है, अगलों में तो वो भी नहीं आता. ठीक, तो आप भी उतना ही कम रखेंगे अगर आप नोट्स वगैरह बना रहे हैं या आपकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, ऑफ कोर्स, क्योंकि आप टाइम डिवीजन भी उसी तरतीब से देते हैं जिस तरतीब से आपकी बुक या आपका पेपर डिजाइन होता है. फिर जी सर. जी सर. coming to variety of cells, the ordinary dry cells that are used in torches, toys, radios, and different other electronic or optoelectronic equipments, voltages range from 1.5 volts to 2 volts. Several of these cells are often needed to produce enough power, or the voltage of these batteries drops gradually during their lifetime. हम इससे भी फेमिलियर हैं. ये एक ऐसी चीज़ है जिसे हम बड़े अरसे से यूज़ कर रहे होते हैं, तो हम में से हर कोई इस चीज़ के बारे में फेमिलियर होता है. हमें डिस्पोजेबल बैटरीज के बारे में काफ़ी पता होता है, क्योंकि हमारे आसपास काफ़ी ऐसा इक्विपमेंट होता है, स्पेसिफिकली रिमोट बेस्ड इक्विपमेंट जो कि बैटरी बेस्ड होता है. ठीक. A wide variety of electrochemical cells have been developed for specific functions in recent years. Okay. Many cells are small, but they do not necessarily produce a high voltage for a long time. Batteries of several cells joined together to give a higher voltage, but take up more space, like UPS batteries. Okay. आपने होगा कि हमारी रिमोट बैटरीज, कार बैटरीज बहुत लेस स्पेस टेकिंग होती हैं, लेकिन जब यूपीएस बैटरीज की बात आती है तो फिर वो ज़्यादा स्पेस टेकिंग होती हैं, लेकिन वो एक हायर वोल्टेज भी प्रोड्यूस करती हैं और एक हायर बैकअप टाइम भी देती हैं. ठीक है, यही काम सेल फोन्स में भी होता है. आप नोटिस करेंगे कि पास्ट डेकेड या 1.5 डेकेड में हमारे सेल फोन साइज जो है वो बहुत छोटे से बहुत बड़ा हो गया है, और वो सेल फोन साइज सिर्फ सेल फोन साइज की वजह से नहीं है, बैटरी साइज की वजह से भी है. आप नोटिस करते होंगे, अगर आप स्पेसिफिकेशंस देखते होंगे सेल फोन्स की, तो हमारे सेल फोन स्क्रीन साइज लार्जर सिर्फ हमारी यूजेज के लिए नहीं हो रहे, बल्कि एक्चुअली इसके पीछे जो टेक्निकल एंड है वो ये है कि बैटरीज भी हमें बड़ी चाहिए. हम चाहते हैं वो ज़्यादा देर तक अपनी वर्किंग में रहे, हम थोड़ा टाइम चार्जिंग कर दें और ज़्यादा टाइम उसे डिस्चार्जिंग के लिए यूज़ करें. तो इसके लिए बहुत सारे जॉब्स हमें कंसिडर करनी होती है. जब हम एक सेल ले रहे होते हैं एक पर्टिकुलर जॉब के लिए, तो हमें कुछ फैक्टर्स कंसिडर करने होते हैं. हम वो सारे फैक्टर्स इन सेल्स के हिसाब से कंसिडर करेंगे. सो starting with that, first, whether or not cell can be recharged. ठीक है,
कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो वन टाइम यूजेज के लिए होते हैं, वो एक दफा चार्ज कर दिए जाते हैं, सिर्फ हम उन्हें डिस्चार्ज करते हैं और उसकी पूरी लाइफ में हम उन्हें रिचार्ज नहीं करते, उन्हें डिस्पोज कर देते हैं soon as we are done with their lifetime. ठीक है. However, rechargeable cells are the one which have a specific number of cycles और हम उसके चार्जिंग और रिचार्जिंग डिस्चार्जिंग साइकिल्स को पूरा करते हैं. वंस अगेन उससे भी हमें डिस्पोज ऑफ करना होता है. ठीक है. तो रिचार्जिंग की पॉसिबिलिटी है या नहीं है? Size and mass of cell, voltage of cell, nature of electrolyte, how long the cell can deliver its maximum voltage, and the cost of cell. These are the 6 points which is important when we consider a cell. Actually, हम लोग इन सारे पॉइंट्स को ऐसे जहन में नहीं रखे होते. क्यों? क्योंकि हमारे एंड पे ये डिसीजन इंडस्ट्री कर रही होती है. आप अपने एंड पे सिर्फ अमूमन लास्ट 2 पॉइंट्स के बारे में सोच रहे होते हैं, राइट? जब हम कोई सेल फोन लेते हैं या हम कोई लैपटॉप लेते हैं तो हम लास्ट 2 पॉइंट्स के बारे में सोचते हैं, कितने टाइम तक वो चल सकती है बैटरी और उसकी कॉस्ट क्या है. उससे ऊपर के डिसीजंस एक्चुअली इंडस्ट्री हमारे लिए करती है. क्या सेल चार्ज रिचार्ज हो सकता है या नहीं हो सकता, साइज ये मास सेल का कितना होना चाहिए, उसकी वोल्टेज कितनी होगी तो वो हमारे लिए ठीक रहेगा, और उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट की नेचर क्या होनी चाहिए कि वो उसको इस हिसाब से यूज भी किया जा सके. ये डिसीजंस हमारे लिए इंडस्ट्री करती है, बट बीइंग अ केमिस्ट यू शुड बी फेमिलियर अबाउट दैट. ठीक. जी सर. ओके, सो मूविंग ऑन. rechargeable cells. The electrochemical cells that you have studied so far are called primary cells. In these cells, the redox reactions continue until a reactants reach a low concentration and voltage of cell declines. The cell is then no longer of any use. Some electrochemical cells can be recharged by passing an electric current through them. The products are then changed back to reactants so the cell can function again. These cells are called secondary cells or storage cells. So now you have bifurcated the cells in 2 types. The disposable cells I was talking about are actually primary cells, and the ones that you can recharge are considered as storage cells or secondary cells. Our car battery is a secondary cell that consists of plates of lead and lead 4 oxide immersed in sulfuric acid. The voltage of each cell is 2 volts. In order to operate the car starter motor, a higher voltage is required. So what do? We put them in order. Now, here is something that is related to physics. I hope you're familiar with cells or batteries that we can either connect them in series or we can connect them in parallel. I hope ये चीज आपने फिजिक्स में पढ़ी होगी ना. जी सर. और आपने ये भी पढ़ा होगा कि हमारे पास सीरीज को और पैरेलल से कौन सा फैक्टर इनहैंस होता है. यदि सीरीज में एक फैक्टर इनहैंस होगा और पैरेलल में इसके ऑपोजिट कोई और दूसरा फैक्टर इनहैंस होगा. ठीक है ना. ये हमने वोल्टेज करंट के हिसाब से ये चीजें पढ़ी होती हैं. अभी मैं फैक्टर्स नहीं काम कर रहा, अभी मैं सिंपल जेनेरिक वे में बात कर रहा हूँ. सो कार के केस में हमारे पास हायर वोल्टेज चाहिए होती है. सो व्हाट डू वी डू? car battery consists of 6 of these cells in a series to provide 12 volts. तो हमारे पास series में simple voltage addition होता है. 2 volts each battery, 6 each cell, and 6 cells in a series provide 12 volts. The battery is recharged by car alternator when the engine is running. वो recharge होती रहती है. उस तरह से हम बैटरी को यूज करते रहते हैं. Lead acid batteries are very heavy but are cheap to manufacture. चूंकि हमें कॉस्ट कम पड़ती है तो वो हैवी होने के बावजूद और लेड के सॉरी व्हाट वाज द वर्ड टॉक्सिक होने के बावजूद, ठीक है, हम उसको प्रेफर करते हैं. Improved batteries for electric vehicles have been developed. हम अब बहुत अच्छी बैटरीज यूज कर चुके हुए हैं. उसमें हमारे पास vehicle batteries और different other types of batteries हैं. Talking about nickel cadmium cells, they're very smaller, have a lower mass than lead acid cell, but they give a lower voltage, but they do not run down as quickly. Laptops में nickel cadmium cell batteries use होती हैं. इन्हें NICAD भी कहते हैं. Ni stands for nickel, CAD stands for cadmium. NICAD batteries. ठीक है. Aluminium air batteries. These are lightweight. They produce a higher voltage than lead acid batteries, but they are expensive. They're not true secondary cells because the aluminium anode has to be replaced from time to time. ठीक है. तो जो बैटरीज ह्यूमंस डेवलप करते रहे हैं रिसेंटली, उसमें से हर बैटरी के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं. आपने लेड बैटरी को देखा. लेड बैटरी का प्रो क्या था
कि दे आर चीप एंड इजी टू मैन्युफैक्चर, ठीक है। लेड बैटरी और कौन क्या है, दे आर हैवी, ठीक। ये बैटरीज इतनी ज्यादा वोल्टेज भी नहीं देती हैं और हमें इन बैटरीज को सीरीज में कनेक्ट करना पड़ता है फॉर अ हायर वोल्टेज, ठीक। निकैड बैटरीज पर आए तो इनके प्रोज क्या हैं, दे आर स्मॉलर, दे हैव लेस मास और दे डू नॉट रन डाउन एज क्विकली, बट कौन क्या है, दे गिव अ लोअर वोल्टेज। डिसएडवांटेज तो ये है कि ये लोअर वोल्टेज देती हैं। एल्यूमिनियम बैटरीज पे आए तो ये भी लाइट वेट हैं, ये हायर वोल्टेज भी देती हैं, बट द प्रॉब्लम इज दैट ये एक्सपेंसिव भी हैं और एल्यूमिनियम एनोड को टाइम टू टाइम रिप्लेस भी करना पड़ता है, ठीक है। सो हर बैटरी के लिए आप यहाँ पे थ्योरेटिकली जब डिस्कशन होगी तो आपको उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बाइफरकेट होने चाहिए, ठीक। सॉलिड स्टेट सेल्स पे आते हैं। रिसेंट ईयर में प्राइमरी सेल्स जो हमने डेवलप किए हैं उनकी वोल्टेज और उनके साइज को हमने इम्प्रूव किया है। वोल्टेज इंप्रूवमेंट से मुराद है वोल्टेज को इंक्रीज करना, साइज इंप्रूवमेंट से मुराद है साइज को डिक्रीज करना। कीप दैट इन माइंड, दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट हैं। Right? Cells of size of a large button are used in heart pacemakers. एक बड़े बटन के जितना जो है ना सेल हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं पेसमेकर्स में, ये सेल्स हम पीसीज के अंदर भी यूज करते हैं, हेयरिंग एड्स में भी यूज करते हैं, अदर मेडिकल इक्विपमेंट में, वॉचेस में, कैलकुलेटर्स में भी ऐसे सेल्स यूज कर रहे हैं। सेवरल एडवांटेजेस हैं उन सेल्स के, लाइट वेट हैं, स्मॉल हैं, हाई वोल्टेज देते हैं, हाई वोल्टेज से 3 वोल्ट्स तक जा सकते हैं, कांस्टेंट वोल्टेज देते हैं ओवर अ टाइम, कोई लिक्विड या कोई पेस्ट नहीं होती इसके अंदर, उनके अंदर लीकेजेस प्रॉब्लम नहीं होते, तो इनके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। Commonly used button cells are lithium or zinc as negative pole and iodine or manganese peroxide or silver oxide as positive pole. और ये कॉमन आपको सेल मिल रहे हैं जिसमें सोनी का CR2032 एक बहुत कॉमन यूज होने वाला सेल है फॉर हेयरिंग एड्स, PCs, लैपटॉप्स एंड डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स। इवन ये वाले सेल्स जो अर्ली पेसमेकर्स थे हार्ट के, उसमें ये वाला सेल्स भी यूज होते रहे जो सामने इस वक्त हैं, ठीक है। इसी तरह इसमें कुछ जापानीज पैनासोनिक सेल्स भी, इन्होंने डिफरेंट कंपनीज के सेल्स यहाँ पे पुट किए हुए हैं, इन्हें हम बटन सेल्स कहते हैं। Any questions from the part so far from this page, I mean? No, sir. Nice. Okay. So निकल कैडमियम सेल्स रिचार्जेबल होते हैं, इनकी हाफ इक्वेशंस के हिसाब से क्वेश्चंस डिस्कस हो सकते हैं। सेल्स या बैटरीज के हिसाब से डिस्कशन क्वेश्चंस में आई थिंक यू शुड गो विद क्वेश्चन नंबर 30 and 31 फॉर दिस चैप्टर टू हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। हमारे 40 मिनट्स पूरे होने वाले हैं, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के जो फ्यूल सेल्स हैं इसको हम फिर वापस आके डिस्कस करते हैं, वापस आके सिर्फ हम फ्यूल सेल पढ़ेंगे, ठीक है। तो सो सी यू एट 12:10, ठीक है सर जी। सर जो आपने कहा टेस्ट लेंगे आप, वो सर इसी का होगा इलेक्ट्रो। चैप्टर नंबर 20 की बात हो रही है, हम जितना भी पढ़ेंगे हमारी छुट्टी होने से पहले। बेटा आपके आने से पहले बात की हुई है कि प्रोबेबली हमारा फर्स्ट हॉलीडे 31st को होगा और लास्ट 9th को बनेगा, 10th को आप रिज्यूम करेंगे। मुझे याद नहीं था, मेरे दिन से निकल गया, लेकिन गर्ल्स ने मुझे याद कराया कि 11th को आपका रिजल्ट है। सो मैंने अभी एक और मैसेज किया ग्रुप में और मैंने 11th से चेंज करके उसे 12th को कर दिया ताकि नेक्स्ट डे हो। रिजल्ट वाले दिन बच्चे वाकई में टेस्ट नहीं दे पाते, तो दिल कहीं और होते हैं, दिमाग कहीं और होते हैं, तो काम नहीं करता सही। तो हम इसे 12th को करेंगे और जितना भी चैप्टर हमने 30th तक पढ़ा होगा वो इंक्लूड हो जाएगा। पूरा पढ़ लिया जो कि मेरी कोशिश है तो पूरा इंक्लूड करेंगे, ना पूरा पढ़ा तो जितना पढ़ा हुआ उतना इंक्लूडेड होगा, ठीक। इतना लंबा चैप्टर है सर। हाँ लेकिन इतनी लंबी छुट्टियां भी तो हैं, कम ऑन, यू हैव लाइक 10 days टू प्रिपेयर। नहीं नहीं सर, प्रिपेयर के लिए, खत्म करने के लिए। हाँ हाँ मतलब हो जाएगा। हमारे पास सिर्फ इलेक्ट्रोलिसिस और ये फ्यूल सेल्स हैं। फ्यूल सेल्स में आज खत्म कर दूंगा, अगले 2 दिन में इलेक्ट्रोलिसिस भी पूरा हो जाएगा, ठीक है सर। ठीक है। ओके क्लास, सो सी यू एट 12:10 सॉरी 12:10। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।